Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna do my much awaited NYKAA makeup and skincare haul. These are my 2 डब्बास. I literally shop 2 times from NYKAA, अलग टाइम, नहीं तो ये एक बड़े डब्बे में आ जाता. But a lot of you guys, I think आपने ही मुझे inform किया था that there is this pink sale going on NYKAA and you should get something. वहाँ पे बहुत अच्छे discount है. So if you do shop, please haul video ज़रूर बनाना. And I didn't plan on doing it because मुझे shopping, like literally I don't need makeup, but I do need skincare. But I got a lot of other stuff. So today I'm gonna show you guys what's inside. Some of these products are gonna be tried and tested क्योंकि एक लॉट मैंने थोड़ा पहले मंगाया था सेल स्टार्ट होने से पहले, and some of the other products from my second डब्बा are relatively new, so मुझे एक हफ्ता हुआ है उसे यूज करते हुए. So without any further ado, let's get started. Okay, so मैंने सारा सामान एक ही डब्बे में शिफ्ट कर लिया है. So here you go. ये वाले आइटम्स मैंने मंगाए थे. First of all, NYKAA ने अपनी पैकेजिंग थोड़ी अप कर दिया. Where is it? सो उन्होंने एक अलग टाइप के बबल रैप में ऐसे रैप करके देने लगे हैं. नेवर गॉट अ ब्रोकन प्रोडक्ट विच इज़ गुड. दिस वीडियो इज़ ऑल स्पॉन्सर्ड बाय मी. मेरे को NYKAA नहीं जानते, मैंने उनसे कोई PR नहीं लिया है एनीथिंग एवर इन माई लाइफ. सो मैंने अपने पैसे खर्च के मंगाया है एंड या इट वॉज एक्सपेंसिव बट इट वॉज ऑन सेल. सो मैंने काफ़ी आइटम्स पे पैसे बचाए भी हैं. सो द फर्स्ट थिंग आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट विद स्किन केयर फर्स्ट दिस टाइम. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज द फेस शॉप का वाइट सीड एक्सफोलिएटिंग क्लिनजिंग फोम. आई हैव बीन रेविंग अबाउट दिस ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो. जब मैं अपने Q&A करती हूँ आप लोग हमेशा पूछते हो कि कौन सा एक फेस वॉश है जो हर स्किन टाइप के लिए अच्छा होगा. एक्सफोलिएटिंग स्क्रब वाले पार्टिकल्स हैं वो भी इतने ज़्यादा हार्श नहीं है स्किन पे, एंड दिस हैज़ मेड माई स्किन फील सो इवन एंड सो सॉफ्ट. सो मैंने कभी भी फेस शॉप एज अ ब्रांड ट्राई नहीं किया था. उनकी प्रमोशन एग्रेसिवली काफ़ी ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं. सो दैट रियली अट्रैक्टेड मी एंड फोर्स मी कि आई शुड गिव दिस ब्रांड अ ट्राई. मेरे पोर्स भी विजिबली कम हो गया. इट्स नॉट अ पोर मिनिमाइजिंग थिंग बट आई डोंट नो वाई दे फील स्क्विकी क्लीन बिकॉज ऑफ द स्क्रब. सो मे बी इसलिए हो, एंड इट हैज़ जस्ट मेड माई कॉम्प्लेक्शन अ लिटिल मोर even and pigmentation भी इससे काफ़ी चली गई है. So I really didn't know what to expect from this, but from the first wash that I used it, I really observed a difference. Face Shop के products are a little expensive from my standpoint of what is expensive. So ये I think 1020,000 plus का है, but sale में मुझे 867 रुपीज़ का मिल रहा था. सो आई थॉट वाई नॉट, थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है सो लेके देखते हैं. एंड आई लव्ड इट सो मच कि मुझे लगा कि फेस शॉप बहुत ही अच्छा स्किन केयर ब्रांड है. एंड देन आई ऑर्डर्ड मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फेस शॉप दैट आई एम जस्ट गोना शो यू राइट नाउ. सो आई गॉट दिस वाटरी टिंट, दिस लिप टिंट फ्रॉम द फेस शॉप, एंड ये भी बहुत अच्छा है. दिस आई ऑर्डर्ड इन द डार्केस्ट वेरिएंट दैट आई कुड. इट इज काइंड ऑफ अ लिप स्टेन विच इज इन द शेड चेरी रेड. इट इज काइंड ऑफ मरूनिश, काइंड ऑफ उसमें पिंक टोन्स भी हैं. ऑल इन ऑल रियली नाइस फॉर इंडियन स्किन टोन्स और टैन स्किन टोन्स. मुझसे डार्कर स्किन टोन्स के, डीपर स्किन टोन्स के लोग भी इसे आराम से यूज कर पाएंगे. इट शोज अप ऑन द लिप्स pretty well. But one thing that I would like to point out is that I thought it's a cheek and lip tint. Like मैं इसे multiple ways में use कर पाऊंगी, but it dries so quickly that it can be patchy. So the first time that I used it, I just put a dot here, I put a dot here, and then मैंने cap लगाई. And by the time I went on to like spread it, तब तक इसका spot मेरे cheek पे एकदम से patchy बन चुका था. But then when you apply it on the lips, it is supposed to give that flush of pink and very hydrated, like a really ombre kind of look, which I really like. But again, it dries really quickly. ये फिर भी आपके lips पे हल्का सा patchy लग सकता है if you use the applicator that it comes in like this. I directly spread it on my lips with the lip brush and then it looks really amazing. I will show and compare कि अगर आप wand के साथ लगा के ऐसे lips पे उंगली से spread करो तो कैसा लगता है, and then if you use a lip brush तब कैसा लगता है. I definitely wanted to try out Benefit के lip tints, but they're so expensive. This was really inexpensive. Like this was for ₹420 and I got it on discount for $378. And I feel like ये चीज़ जिसका एक ड्रॉप ही इतना ज़्यादा स्प्रेड कर देता है आपके लिप्स पे, it will last you for a very long time. Okay, so another thing that I got in the second lot of my order is also from Face Shop. मैंने बहुत सारे Face Shop के products मंगाए हैं इस बार. It is the Jeju Volcanic Lava
pore mud pack and I literally got it because I felt like this was not meant for pores and इसने मेरे pores इतने अच्छे कर दिए. So imagine एक pore clay mud mask क्या करेगा मेरी skin के लिए. You guys know I have oily skin, I have sensitive skin, so if a brand works for me I stick to that. That is why I stick to Mamaearth more often क्योंकि वो brand मुझे बिल्कुल भी कोई breakouts नहीं देता है. And since Face Shop performed really well on me, I wanted this mud pack. First of all, the packaging looks really nice and luxurious. I really love it. And if you open it, they have given a lid जिससे आपका product अंदर protect हो सकता है. And if you open the lid, here you go. Here is the mud pack. इसको मैंने अभी तक एक ही बार use किया because I just got it I think 5-6 days back. It just smells like मिष्टी दही जो आपको मदर डेयरी का मिष्टी दही मिलता है. It just smells like yogurt or something. So yeah, that's the tea right here. So ये बेसिकली पोर के लिए है एंड ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है. मैंने इसको फर्स्ट टाइम अभी यूज़ किया था 2 दिन पहले एंड आई couldn't really फील अ डिफरेंस. आई डोंट नो वाई. मे बी ये थोड़ा ऐसा फेस पैक है जो आपको ओवर टाइम डिफरेंस दिखाएगा, बट फर्स्ट टाइम में आई कुडंट रियली फील anything actually. So this was not even on discount. This was for 1320 rupees and yeah, I invested a lot in this trusting the brand. So maybe इसको जब मैं over time use करूँ तो मुझे कुछ दिखे pore minimizing effect और मेरी skin अच्छी हो रही है. One thing is that ये मेरी skin को काफ़ी इसने matte बना दिया था. It's really drying and it feels like जब आप इसे apply करोगे your skin is getting tighter and tighter, which I think is a good thing. So yeah, इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी. इफ़ यू डू वांट एन अपडेट ऑन दिस थिंग देन यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं अपनी स्टोरी पे आप लोगों को बताती रहूँगी कि इसका कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज 1320 रुपीज़ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, इज़ अ ह्यूज अमाउंट. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्किन केयर देन यू शुड बी डेफिनेटली श्योर कि ये काम करता है या नहीं करता है. मैंने इतना सारा सामान मंगा लिया था फेस शॉप से, तो आई थिंक मेरा ऑर्डर 1500 से ऊपर का तो चला ही गया था अभी तक. सो फेस शॉप पे भी एक एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा था कि अगर आप 1500 या आई फील लाइक 1800 से ऊपर की शॉपिंग करते हो फेस वॉश से, सो यू विल गेट दिस फ्री. सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द फेस शॉप. दिस इज अ राइस वाटर विच इज माइल्ड क्लेंजिंग वाटर. ये इट एक्ट्स एज अ मेकअप रिमूवर, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. आई यूज्ड इट वन टाइम, इट डज द जॉब रियली वेल. Alright, so we're left with 2 items from skincare. The first one is Mamaearth का Bye Bye Blemishes face cream. I do have a coupon code with Mamaearth and मैं उनकी official website से भी मंगा सकती थी. ये मुझे 20% ऑफ मिल जाता अपना ही कोड यूज़ करके. बट सिंस मैं इतना कुछ शॉप कर रही थी एंड मुझे यहाँ पे भी थोड़े डिस्काउंट्स मिल ही रहे थे, सो आई थॉट वाई नॉट गो अहेड एंड इसी से ले लेते हैं. सो इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम Mamaearth, I do have a code, okay? I'll place it right here in case you want it. So it is for uneven skin tone, it is for acne scars, blemishes, pigmentation, and what I do is कि मैं इसको अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करती हूँ. आई फील लाइक आप इसको मिक्स भी कर सकते हो, कोई स्किन पे बैड इफेक्ट नहीं होता है. या फिर आप मॉइस्चराइज़र लगाओ और उसके ऊपर ये लगाओ. इट इज़ रियली रियली नाइस. व्हाट आई कुड रिमेंबर 3-4 साल पुराने भी जो एक्ने मार्क्स थे उसको भी इसने विजिबली लाइटर कर दिया है. आई डू प्लान टू मेक अ वीडियो ऑन इट, नॉट अ रिव्यू बट आई विल इंक्लूड इट समवेयर इन माई फ्यूचर वीडियो क्योंकि आप लोगों ने इसका रिव्यू मांगा है. सो आई ट्राई टू गिव अ मिनी रिव्यू ऑफ दिस, बट या सो फार आई वुड लाइक टू से कि ये बहुत अच्छा यूज़ हुआ है. ये मेरे पहले लॉट में से आया था, सो आई गॉट इट आई थिंक 3-4 वीक्स बैक एंड या इट हैज़ वर्कड रियली वेल. आई एम अप्लाइंग इट डेली, आई एम नॉट इवन किडिंग यू गाइज, आई एम अप्लाइंग इट डेली एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग. द स्मेल इज़ काइंड ऑफ लाइक च्यवनप्राश वाली स्मेल है इसकी. Yeah, it is a little strong for my liking, but it does the job really well. So a big thumbs up to Mamaearth's Bye Bye Blemish Cream. And the last thing from skincare products is Innisfree ka Green Tea Mist. So I really love this. It also has Jeju Island seeds and everything in it. That all that organic and Korean skincare vibe kind of stuff. So I never gave Innisfree a try ever. This is my first product from Innisfree, and from what I can observe, it really does the job very well. If you apply a moisturizer, आप पूरा तैयार होके भी जाते हो and you feel like आपको थोड़ा हाइड्रेशन की ज़रूरत है, योर स्किन इज़ गेटिंग क्रैंकी या सन में थोड़ा बर्न टाइप का लग रहा है, यू कैन स्प्रिट्स दिस एंड जस्ट डैब इट ऑफ. ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. दिस इज़ 50 ml ऑफ प्रोडक्ट. इसमें आई थिंक 100 या 150 ml का भी बड़ा वेरियंट था, बट आई वॉन्टेड टू जस्ट ट्राई इट आउट. सो ये मैंने लिया. आई थिंक इट वॉज फॉर 450 रुपीज़. आई थिंक इट इज़ टोटली वर्थ इट. स्किन केयर इज़ definitely an investment.
सो आई डोंट माइंड कि मैं स्किन केयर पे ज़्यादा खर्चूँ, बट इन टर्म्स ऑफ मेकअप आई ट्राई टू कीप इट एज अफोर्डेबल एज पॉसिबल. सो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग जो आपको पूरे दिन हाइड्रेट करेगा, इफ़ यू हैव अ 9 to 5 जॉब, इफ़ यू हैव कॉलेज एंड यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑन द गो, देन गेट दिस. इट्स रियली नाइस. सो आई गॉट दिस इज जैकलिन यूएसए का प्रो स्ट्रोक ब्राउ पेंसिल एंड इट इज़ फॉर ऑल डे वेयर, यूनिवर्सल शेड, वाटर प्रूफ. इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्लैक सॉर्ट ऑफ थिंग. आई डोंट नो इसमें अगर अदर शेड्स थे या नहीं, बट आई रियली लाइक इसका जो अंदर से मटेरियल निकलता है. इट इज स्लांटिंग, सो इट जस्ट रियली मेक्स योर एप्लीकेशन वेरी वेरी प्रिसाइज, विच आई रियली लाइक. एंड इसकी अदर साइड में ये स्पूली है, विच इज़ ग्रेट. लाइक मुझे लाइनर या जो नीचे प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा स्पूली पसंद है, बिकॉज इट जस्ट गिव्स माई ब्राउज दैट शेप विच आई रियली लाइक. लाइक यू कैन सी मेरी आईब्राउज इस टाइम पे दे आर फुल ऑन. लाइक इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा बाल आए हुए हैं अभी. आई हैव टू गेट देम थ्रेडेड, बट सिंस आई हैव लाइंड इट विद दिस, अभी भी ये काफ़ी स्नैच एंड काफ़ी अच्छी लाइक लग रही हैं. नॉट दैट एकदम शार्प, बट आई डू फील लाइक मुझे मेरा जो टेस्ट है आईब्राउज में, इट इज़ रियली नेचुरल, नॉट दैट बुशी, नॉट दैट थिन, जस्ट नॉर्मल आईब्राउज रखो यार. सो वैसा टाइप का मेरा है एंड आई एम नॉट रियली दैट क्रेजी अबाउट ब्राउज. सो अ सिंपल प्रोडक्ट वर्क्स फॉर मी. टाइम ऑफ दैट सेल इट वॉज ₹4 250. आई थिंक ये 399 रुपीज़ का है इन जनरल, बट 250 में अ गुड आईब्रो पेंसिल, थम्स अप फॉर इट. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द recent lot is this Maybelline की Falsies Push Up Drama Mascara. This is one of my absolute favorite mascaras. Other than this, I also like Maybelline Lash Sensational. It's really good for those curly lashes. But this one, जब से मैंने try की है, I've already ordered 2 times and ये मेरा third buy है. It just makes your lashes lengthy, like lengthening के लिए बहुत अच्छा है, and it also does the job of separating them and adding a little bit of volume. So इतना ज़्यादा crazy भी नहीं लगता है, and it is just like the name Push Up Drama. It just acts like a push-up bra. It just pushes up your lashes to another notch and I really like it. It's waterproof, sweat proof. Maybelline, like no one does mascaras as better than Maybelline. इसका wand भी बहुत अच्छा है and it just provides that precision, and I'm really crazy about lashes though. I can't do without mascara. If you ask me what I need in my makeup routine, I won't say foundation or concealer. I will say I need my mascara and I need some good lipstick, and I'm sorted and I can just create a good look out of these 2 items. So yeah, this mascara is love, and if you haven't tried it, I don't know what you're doing with your life. It's not that expensive. Now that sale चल रही थी, ये 570 कुछ रुपीज़ का है and I got it for 300 something. Yeah, I got it for 399 rupees. So 400 रुपये में you're getting a bomb ass mascara. Just try it out and let me know if you feel a different way about it. I know you won't. This is the best. Okay, so the last of the bunch are these 3 lip items that I got. I'm gonna start off with the lip balm. This is a simple lip balm from Maybelline yet again. This is from their Alia Loves Maybelline, I think. No, Alia Loves New York collection, and I never tried it. I always love Maybelline lip balms. They're a little waxy, but they provide a nice tint which lasts all day long. So if I have to go outside and I don't want to put lipstick, I go for darker shades of Maybelline lip balms. Otherwise, I do have another lip balm at home which has coconut oil and all of those good stuff जो मैं lips की असल में lips को moisturize करने के लिए and healthy रखने के लिए लगाती हूँ. I do take care of them a lot, but this one is very very nice for days when you just want to head out, you want your lips to be moisturized and you want that tint or color on your lips. So it is in the shade Highline Wine. This is really nice. I really hate the fragrance of this. This is just very very waxy. It just smells like plastic का जो बच्चों का मेकअप होता है या फिर जो crayons होते थे. It's really horrible, it's hideous, but the color is really good and the fragrance goes away after some time, after 2 to 3 hours, so you don't really have to care about it. The color is really really nice though. एक swipe में ही बहुत अच्छी pigmentation आ जाती है. Doesn't look like a lipstick, almost looks like a moisturizing lip stain, so which is good. So yeah, this was for rupees
123, जबकि इसका रियल कॉस्ट है 175. सो आई डिड गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस वन. मेबलिन हमेशा नायका की जब भी सेल लगती है मेबलिन पे हमेशा 40-50% ऑफ होता है या 20% ऑफ तो होता ही होता है. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज Chambor एक्सट्रीम वेयर ट्रांसफर प्रूफ लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 484 Truffle. एंड इट जस्ट, इसका नाम बिल्कुल एप्ट है. इट जस्ट इज अ ट्रफल केक काइंड ऑफ अ शेड. Just eclairs and caramel and vanilla, all that sort of thing that I can't eat because I'm on a diet. And to be really honest with you guys, this is the best liquid lipstick formula that I've tried other than NYKAA की lip lingerie in the shade exotic. That one is fab. So this one is really nice. The color is good. It is also like very pigmented, one swipe coverage. And the best part is that इसको लगाने के बाद your lips don't feel drying, जबकि NYKAA वाली lipstick में आपके dry लगते हैं lips, but this is not drying at all. एंड जब ये ड्राई हो जाती है आपको लगता भी नहीं है कि आपके लिप्स के ऊपर कुछ है. इट्स दैट कंफर्टेबल. दिस वॉज नॉट ऑन डिस्काउंट. दिस वॉज फॉर ₹845, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू गेट इट क्योंकि आई वॉज क्रेविंग फॉर समथिंग वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रांसफर प्रूफ. सो आई गॉट इट. आई डू हैव टू अटेंड इवेंट्स या एंड आई डू हैव टू शूट आउटसाइड, ईट आउटसाइड. आई डू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वेयर आई नीड एन एक्सट्रीम वेयर लिपस्टिक. इसमें शेड्स भी इतने ज़्यादा सुंदर थे. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू बाइंग अनदर शेड in pinkish category from this one, like a mauve pink. अगर आपकी कोई recommendation हो just comment down below. The last lipstick that I got is actually a recommendation. Anandita Chakravarti, my friend, made a video on her favorite nude lipsticks and she mentioned this Maybelline Nude Nuance. Also Komal Pandey, she also loves this lipstick range and especially this shade Nude Nuance. And I can't complain guys, मैंने ये लगाई and it looks really fab on me. Actually I'm wearing it right now and I know before you guys ask, this is the shade, right? I love this shade. And the best part is कि ये बहुत ही inexpensive है. This is from their creamy matte collection. It's not matte at all. It's creamy. It transfers like बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है. एंड इट कैन फेड अवे. इट कैन लास्ट यू फॉर अबाउट 3 to 4 hours if you don't eat, and if you eat it will get vanished. Otherwise अगर आप मेरे जैसे हो, I can put on lipstick and I can make it stay because I have mastered the art of eating while not eating my lipstick. But my mom applied this and had her lunch and it was all gone. So yeah, ये उन पे भी सूट करता है. So I feel like this is one nude shade जो light to medium dark, medium deep उन सबको सूट कर जाएगा. For a little more deeper skin tone or very tan skin tones और olive tones, I feel like ये थोड़ा light रहेगा. But for a broad range ये सब पे अच्छा लगेगा because it has that warm tone and it does have that nudie orangish tint to it, which I love. And now I understand कि इतने सारे YouTubers and bloggers क्यों इसके बारे में rave कर रहे थे, because this lipstick shade is so amazing and also it's very inexpensive. It is $299 which essentially is $300. So yeah, I don't really need lipsticks but I got it anyway because so many people loved it and now I know why. Alright guys, so the dabbas are finally empty. This week's quirky shout out goes to Mandira Devnath. I just really admire a sensible, well put together comment and yours was one of them. आपने बहुत अच्छी तरह explain किया as a viewer what you observe on my channel and as also from the back end side of the creator कि वो कैसी audience को target कर रहा है, what are the reasons कि वो इतनी outrageous looks नहीं कर रहा है, and trying to keep it practical for you guys. And it's amazing कि आपने इतना सब कुछ नोटिस किया एंड इतनी अच्छी तरह से आर्टिकुलेट किया अपने कमेंट को. आई रियली लव्ड इट. इफ यू आल्सो वांट टू गेट अ quirky shout out in the next week's video, just answer this simple quirky question of the week, which is that which shade of lipstick did you like in this video? Was it Chambor Truffle, was it Maybelline Nude Nuance, or was it this lip tint by Face Shop in the shade Cherry Red? So इन तीनों में से कौन सा shade you liked the best? I want to know in the comments down below. Feel free कुछ और भी उस comment में add करना हो तो मेरी तारीफ for example. So I would love to give you a shout out. And yeah, that's it for today's video guys. I really hope you like this hashtag makeup वाला quirky haul. And please इस video को like कर दो. Quirky question तो answer करना ही है. If you are new to my channel, if you're seeing this face for the very first time, please check out all the videos linked below. I know you're gonna love them. And if you do, please subscribe to my channel. Hit that bell notification to get notified every time I upload a new video. Every Friday, every Tuesday, 11 AM सुबह.
and also follow me on all my socials right there, especially Instagram. I'll keep you guys updated with ये new products का क्या update निकलता है, what works for me, what doesn't, and I'll see you next time. Bye.